Hello dear friends, welcome again on my YouTube channel High Tech View. Dear friends, कंप्यूटर अवेयरनेस MCQ सीरीज का ये 19th पार्ट है और जैसा कि आपको पता है कि हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 134 क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। इससे पहले के पार्ट में हम 54 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं और आगे के क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर पार्ट 3। The question is, personal computers use a number of chips mounted on a main circuit board. What is the common name for such boards? पर्सनल कंप्यूटर एक मुख्य सर्किट बोर्ड पर लगे कई चिप्स का उपयोग करते हैं। ऐसे बोर्डों का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शंस आर ए डॉटर बोर्ड, बी मदरबोर्ड, सी ब्रॉडबोर्ड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मदरबोर्ड। The next question is, which of the following are the components that reside on motherboard? निम्नलिखित में से कौन से घटक हैं जो मदरबोर्ड पर रहते हैं? ऑप्शंस आर ए CMOS बैटरी, बी फैन, सी PCI slot and option D all of these. The correct answer is option D all of these. The next question is, the communication line between CPU, memory and peripherals is called a dash. CPU, memory और peripherals के बीच संचार लाइन को डैश कहा जाता है। ऑप्शंस आर ए बस, बी लाइन, सी मीडिया एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बस। The next question is, dash connects components inside the motherboard like CPU and system memory. Dash मदरबोर्ड के अंदर CPU और सिस्टम मेमोरी जैसे घटकों को जोड़ता है। ऑप्शंस आर ए डाटा बस, बी एड्रेस बस, सी इंटरनल बस एंड ऑप्शन डी एक्सटर्नल बस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इंटरनल बस। The next question is, the address of input-output device or memory is carried by the dash. Input-output device या memory का पता dash द्वारा किया जाता है। Options are A data bus, B expansion bus, C address bus and option D system bus. The correct answer is option C address bus. The next question is, a physical connection between the microprocessor memory and other parts of the microcomputer is known as dash. माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी और माइक्रोकंप्यूटर के अन्य भागों के बीच एक भौतिक संबंध को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस आर ए पाथ, बी एड्रेस बस, सी रूट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी address bus. The next question is, the read-write line belongs to dash. पढ़ने लिखने की पंक्ति डैश से संबंधित है। ऑप्शंस आर ए द डाटा बस, बी द कंट्रोल बस, सी द एड्रेस बस एंड ऑप्शन डी CPU बस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी द कंट्रोल बस। The next question is, the name of the location of a particular piece of data is its dash. डाटा के किसी विशेष भाग की स्थिति का नाम उसका डैश है। ऑप्शंस आर ए एड्रेस, बी मेमोरी नेम, सी स्टोरेज एंड ऑप्शन डी डाटा लोकेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एड्रेस। The next question is, which of the following is used to connect the different external devices?
निम्नलिखित में से किसका उपयोग विभिन्न बाहरी उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है? ऑप्शंस आर ए एड्रेस बस, बी डाटा बस, सी कंट्रोल बस एंड ऑप्शन डी एक्सटर्नल बस. The correct answer is option D external bus. The next question is which is not an integral part of computer? कौन सा कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है? ऑप्शंस आर ए CPU, B माउस, C मॉनिटर एंड ऑप्शन डी UPS. The correct answer is option D UPS. The next question is a device that not only provides surge protection but also furnishes the computer with battery backup power during a power outage is dash. एक उपकरण जो न केवल सर्ज प्रोटेक्शन प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप और पावर भी प्रदान करता है, वह डैश है. ऑप्शंस आर ए बैटरी स्ट्रिप्स, बी UPS, C surge strips and option D USB. The correct answer is option B UPS. The next question is a temporary storage area attached to the CPU for input-output operations is a dash. इनपुट-आउटपुट संचालन के लिए CPU से जुड़ा एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र एक डैश है. ऑप्शंस आर ए चिप्स, बी बफर, सी रजिस्टर एंड ऑप्शन डी कोर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बफर. The next question is to measure the speed of the processor dash is used. प्रोसेसर की गति को मापने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है. ऑप्शंस आर ए प्रोसेसिंग स्पीड, बी क्लॉक स्पीड, सी मेमोरी एंड ऑप्शन डी यूनिट. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्लॉक स्पीड. The next question is a uniform interval of CPU time allocated for use in performing a task is known as dash. किसी कार्य को करने में उपयोग के लिए आवंटित CPU समय के एक समान अंतराल को डैश के रूप में जाना जाता है. ऑप्शंस आर ए रियल टाइम, बी सीक टाइम, सी डाउन टाइम एंड ऑप्शन डी टाइम स्लाइस. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी टाइम स्लाइस. The next question is what is the full form of DMA? DMA का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस आर ए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, बी डायनामिक मेमोरी एक्सेस, सी डायरेक्ट मेथड एक्सेस एंड ऑप्शन डी डबल मेमोरी एक्सेस. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. The next question is the machine cycle includes dash. मशीन चक्र में डैश शामिल हैं. ऑप्शंस आर ए fetch, B decode, C execute and option D all of these. The correct answer is option D all of these. The next question is when machine instructions are being executed by a computer, the instruction phase followed by the execution phase is referred to as dash. जब कंप्यूटर द्वारा मशीन निर्देश निष्पादित किए जा रहे हैं तो निष्पादन चरण के बाद निर्देश चरण को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है. ऑप्शंस आर ए प्रोग्राम साइकिल, बी मशीन इंस्ट्रक्शन, सी इंस्ट्रक्शन साइकिल एंड ऑप्शन डी टास्क साइकिल. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शन साइकिल. The next question is dash is the process of carrying out commands. Dash कमांड को पूरा करने की प्रक्रिया है. ऑप्शंस आर ए fetching, बी
storing, C. decoding, and option D. executing. The correct answer is option D. executing. The next question is the processor must have two inputs dash. प्रोसेसर में दो इनपुट डैश होने चाहिए. ऑप्शंस आर ए इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा, बी इंफॉर्मेशन एंड डाटा, सी इनपुट एंड आउटपुट, एंड ऑप्शन डी सीपीयू एंड इंस्ट्रक्शंस. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा. The next question is dash defines the parameter of the action and depends on the operation. Dash क्रिया के मापदंडों को परिभाषित करता है और संचालन पर निर्भर करता है. Options are A. opcode, B. operand, C. instructions, and option D. data. The correct answer is option B. operand. The next question is pipeline strategy is called implement dash. पाइपलाइन रणनीति को डैश लागू करना कहा जाता है. ऑप्शंस आर ए इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, बी इंस्ट्रक्शन प्रीफेच, सी इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग, एंड ऑप्शन डी इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेटिंग. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इंस्ट्रक्शंस प्रीफेच. The next question is on the motherboard the connection points for chips are referred to as dash. Motherboard पर chips के connection points को dash कहा जाता है. Options are A. slots, B. sockets, C. ports, and option D. lines. The correct answer is option B. sockets. The next question is the abbreviation of CPU is dash. CPU का संक्षिप्त नाम dash है. Options are A. Central Programming Unit, B. Central Processing Unit, C. Central Processor Unit, and option D. None of these. The correct answer is option B. Central Processing Unit. The next question is the outer rectangle box which stands beside the computer is to be termed as. बाहरी आयत बॉक्स जो कंप्यूटर के बगल में खड़ा होता है को क्या कहा जाता है. ऑप्शंस आर ए सीपीयू कैबिनेट, बी इन्वर्टर, सी यूपीएस, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सीपीयू कैबिनेट. Next question is dash is the brain of the computer. Dash कंप्यूटर का दिमाग है. Options are A. CPU, B. monitor, C. mouse, and option D. printer. The correct answer is option A. CPU. The next question is CMOS stands for. CMOS का मतलब है A. Complementary Metal Oxide System, B. Complementary Metal Oxide Semiconductor, C. Common Machine of Survey, and option D. None of these. The correct answer is option B. Complementary Metal Oxide Semiconductor. The next question is dash is a program which is used to start the computer once the computer is turned on. डैश वह प्रोग्राम है जिसका उपयोग कंप्यूटर चालू करने के बाद कंप्यूटर को चालू करने के लिए किया जाता है. ऑप्शंस आर ए प्रोसेसर, बी CMOS, C RAM, and option D BIOS. The correct answer is option D BIOS. So dear friends, आज हमने टोटल 134 क्वेश्चन में से 81 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है और आगे के क्वेश्चंस को हम
हम अपने आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए, और यदि यूज़फुल लगें तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।